Right. So let's talk about birth control patches. अब ये क्या करता है? It releases two hormones that work together to prevent pregnancy. और एक प्लास्टिक पैच होता है जो अटैच होता है स्किन पर एंड इट इज रिप्लेस्ड एवरी वीक. So it also makes the cervical mucus thick and prevents ovulation. Then you have birth control pills जो कि progesterone and estrogen contain करती हैं and they also prevent ovulation and fertilization by thickening the mucus of the cervix. Pills are taken for 21 days followed by 7 days taking placebo pills जिनके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेडिकल इफेक्ट वाला इंग्रेडिएंट नहीं होता. They are taken during the fourth week of the menstrual period, and placebos are taken as a reminder to the body. Moving on to intrauterine devices, yeah, IUDs, which are inserted into the uterus to prevent pregnancy. And it's a long term, reversible, and one of the most effective birth control methods out there. अब एक टी शेप डिवाइस होती है, ठीक है ना, विच इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, और दो टाइप्स की होती हैं. देयर इज अ कॉपर आईयूडी एंड अ हार्मोनल आईयूडी. सो कॉपर आईयूडी इज गोइंग टू फिजिकली ब्लॉक स्पर्म्स, ठीक है ना, एंड विल स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स. एंड द हार्मोनल आईयूडी जिसमें प्रोजेस्टिन होता है इज यूज्ड विद द डिवाइस विच परफॉर्म्स द कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शंस already discussed above. ठीक है. So they are effective from 3 to 12 years. And then finally, you have a diaphragm, which is a dome shaped silicone cup with a flexible rim. And it is inserted into the vagina in the way that it covers the cervix, thus preventing sperms to enter. And it is used normally with a spermicide gel or cream. So it works in two ways. The diaphragm blocks the opening to the uterus, and the spermicide stops sperm from moving. ठीक है ना. So spermicides basically क्या होते हैं? They are chemicals that immobilize the sperm.